is this grid is very important. Most of the topics that we will be discussing will be dependent on this grid. So obviously, personality number is not dependent on this grid only. But whenever we are going to do any kind of analysis regarding any person's DOB, हम आप सबसे पहले लोसू ग्रिड ही बनाते हैं और फिर उसके बाद we start with the process of analysis or you can say the predictive part. So these are the fixed positions of number. यानी 2 जब भी मैं ऐसा ग्रिड बनाऊंगा 3 by 3, 2 will be here only. 8 will be here only. 1 will be here only. It is said that it is decoded from that totalized cell के ऊपर जो dots था उसी से ये decode किया. Okay? And we are going to utilize it and see that okay what kind of benefits, what kind of prediction we can give on that. अब इन सारे इसका ये जो पर्टिकुलर चीज है इसमें फर्दर कुछ नेमिंग करेगी. फॉर एग्जांपल this horizontal set of numbers, ये जो 492 है, these are the grids. So these are either called planes or arrows. ठीक है, so this is one of the arrow, this is second arrow, this is one of the arrow. Then vertically we can say okay this is one of the arrow, this is one of the arrow, this is one of the arrow. Diagonally we can say that okay 4 5 6 forms an arrow या plane कह सकते हैं या फिर 2 5 8 को भी एक arrow या plane कह सकते हैं. बेसिकली अगर हमसे पूछे कि arrow क्या है तो we will say that okay it is a set of grids. कितने ग्रिड्स का सेट है? 3. बिकॉज अ सिंगल एरो कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रिड्स. उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता. 3 ग्रिड, 1 2 3, these are called arrows. Now further, each and every plane or arrows are given a name also. अब ये नाम क्या है? For example, this 492, these set of numbers, or you can say this particular set of grids, is given the name of mental plane or mental arrow. So I'm just writing mental. Something that has to do with our brain. हमारे दिमाग, हमारे मेमोरी, हमारे बहुत सारे other activities. Explanation तो will come in later phase. So it is called mental plane. What are the application of it? वो हमें आपको पढ़ना है. 357. It is said that okay, it is emotional plane. And the last thing is 816. It is called practical plane. Obviously, we are going to get into the names on nothing. So these are the horizontal planes or unke naam. But as I discussed that okay, there are vertical planes also. So one of the plane consists of these 3 numbers, that is 438. One of the number 4951, then 276. So these are the set of numbers. ठीक है, इनके भी नाम दिए गए. So first 438 is called thought power plane, or you can simply say thought plane. Okay? Thought power plane. This 951 is called willpower plane. And this 276 is action. This action and this practical is very much correlated in the theory part. बहुत ज़्यादा पास है अपने एक दूसरे के. But other arrows are somewhat different. Every arrow is different. Mental plane is different from emotional. Emotional is different from practical, and so and so. ठीक है. But again, practical and mental में थोड़ा बहुत correlation होगा. It will be there. So when we will jump into the theory part, वो सारी चीज पता लग जाए. So in some of the ancient Hindi books I am seeing. So when it was written, it was not called Loshu Grid. It was called 15 number का यंत्र. It was called 15 number का यंत्र. It is not relevant today because everybody knows it by the name of Loshu Grid. But अगर आपको by chance कभी ऐसे गलती से मिलता है कि it is called 15 number का यंत्र, so what does that mean? It simply means that add the digits of any arrow, it will sum up to number 15. For example, 4 plus 9 plus 2, 15. मैं सारे को नहीं कर रहा हूँ, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ये सर. फिर मान लेते हैं दिस 951, 9 plus 5 14 plus 1 15, ये भी 15 पे. डायगोनल 6 plus 5 11 plus 4 15. So that's why it is said that okay this is some kind of यंत्र जिसका सम जो है वो 15 पे ही आता है. We are going to discuss about yantra in the last class of master's course, which is about Vedic remedy. वहाँ पे we get into the details of yantra, what is that here. But right now, in terms of numerology, it is not very much relevant. that 15 number का यंत्र अपने को पता हो नहीं भी पता हो, it is completely fine. Then next important part in this particular thing is that each number belongs to certain elements. But these elements are not Panch Mahabhut. What do I mean by पंच महाभूत? पंच महाभूत कहते हैं जिससे ये सारी संसार. देखिए हमारे पंच महाभूत में क्या क्या सिस्टम? अर्थ, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये है. सो न्यूमरोलॉजी में बस थोड़ा चेंज हो जाता है. अर्थ है वहां पे भी, वाटर है वहां पे भी, फायर भी है, बट एयर स्काई गायब हो जाता है. दैट्स व्हाई आई सेड 5 elements are there, but we can't say that पंच महाभूत.
जो हमारे आपकी संस्कृति में मानी जाती है, जो कहते हैं कि दैट देयर इज वन कॉमन टर्म कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सो इट बेसिकली मीन्स वट एवर जिससे ये संसार बना है, जो भी संसार में है वो हमारे अंदर। हम भी इन्हीं 5 चीज से बनी, ये संसार भी इसी 5 चीज से बना है। तो दिस इज वन बेसिक थिंग जिसके इन एंड अराउंड बहुत सारी बातें घूमती है। यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा, देयर विल बी वुड एलिमेंट एंड देन देयर विल बी मेटल, विच इज नॉट हियर, हमारे इधर सिस्टम में नहीं। तो न्यूमरोलॉजी करें तो न्यूमरोलॉजी की ही बात करेंगे। सो द 5 elements आर अर्थ, फायर, वाटर एंड देन वुड एंड मेटल। ठीक है, ये सारी चीजें। तो विच नंबर कम अंडर विच कैटेगरी, वो अपने को देखना। तो अर्थ से ही शुरू करते हैं। सो देर आर 3 numbers which comes under the category of earth element: 2, 5, 8। प्राइमरली इसका यूज कहाँ आता है वो भी मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा जैसे ओवरव्यू। मेनली एट द टाइम ऑफ गिविंग रेमेडीज इसका बहुत काम आता है। न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एट द टाइम ऑफ गिविंग रेमेडीज वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ओके, अगर हम कभी कुछ चीजें भूल जाएं, बिकॉज देर आर सो मेनी थ्योरी, देर आर सो मेनी डिटेल्स दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कीप एवरीथिंग इन आवर माइंड एकदम बिल्कुल बिगनिंग स्टेज में। लेटर ऑन बाय डूइंग रिगरस प्रैक्टिस एंड ऑल दैट इट विल बी वेरी कन्वीनियंट कि हम हर चीज ध्यान में रख पा रहे हैं, लेकिन बिगनिंग में। सो एक चीज ध्यान रखना है कि these elements will help us in determining the remedy of many things under the subject of fire, number 9, water, number 1, wood, 3, 4, metal, जो बच गया 6, 7। तो ये सारे आपके 1 to 9 के नंबर सारे कवर हो गए, एंड दीज आर द एलिमेंट्स। ये भी आप लिख लो कि विच नंबर बिलोंग्स टू विच एलिमेंट, ये आप नोट डाउन करो। So there are these 2 details that you need to note down. One is regarding grid, that okay, this is Loshu grid. Then these are the planes or arrows with their names, key, mental plane and all that, and their elements. Now we are coming into the important parts। धीरे 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 हम बेसिक से अब न्यूमरोलॉजी, अब हो गया, हमने एंशियंट समय की बात कर ली होगी, this is about Kali, this is about this. Now we are coming into the subject numerology, so that's why it is becoming important। इन सबका काम आएगा, कभी ना कभी सबका काम आएगा। We are going to study about this in later phase of diploma। Next is that very nice that हमें ये सारी चीज पता लग गई। सर, हाँ, यस सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, सर, ये जो आप प्लेन्स बताए उसमें जो 6 बताए और एक जो कर्नर वाला 4, 5, 6 2, 5, 8। हाँ, उसका कोई नाम ऐसा पॉपुलरली नहीं मिलेगा आपको, मीन्स इन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स यू विल नॉट गेट द नेम्स ऑफ इट, बट फिर भी थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। यहाँ पे आप इसका नाम बता सकते हो, फोकस प्लेन। जब इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो देन वी विल गेट द क्लैरिटी कि व्हाई इट कैन बी सेड फोकस प्लेन। एंड दिस 4, 5, 6 पॉपुलैरिटी प्लेन,